लायन्स न्यूज बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। सुरुवातीला पाहूयात ठळक बातम्या। लायन्स क्लब इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 अंतर्गत स्वास्थ्य संवाद उपक्रमाचं आयोजन। लायन्स क्लब ऑफ पुणे शताब्दीच्या वतीनं नेत्र तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन। लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा खंडाळातर्फे रक्तदान शिबिराचं आयोजन। लायन्स क्लब इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 मधील झोन 3 च्या वतीनं झोन सोशल कार्यक्रमाचं आयोजन। आता पाहूयात बातम्या सविस्तर रूपात। लायन्स क्लब ऑफ पुणे सहकार नगर, लायन्स क्लब ऑफ तळेगाव, लायन्स क्लब ऑफ पुणे सेंट्रल, लायन्स क्लब ऑफ पुणे अशोकनगर गोल्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यातील वेश्यालयातील महिलांसाठी स्वास्थ्य संवाद या विशेष उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। लायन्स क्लब इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 चे प्रांतपाल लायन विजय भंडारी यांच्या हस्ते या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। या उपक्रमांतर्गत महिलांसाठी ब्रेस्ट कॅन्सर, गर्भाशयाचा कॅन्सर आणि इतर आरोग्य तपासण्या केल्या गेल्या। या उपक्रमात मंथन फाउंडेशनचे दीपक निकम आणि आशा भट यांचं मोलाचं योगदान लाभलं। सोबतच गर्भाशयाच्या तपासणीसाठी अस्मिता फाउंडेशनच्या डॉक्टर अस्मिता गुप्ते, त्यांची टीम आणि रक्त तपासणीसाठी लायन गंधाली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जबाबदारी पार पाडली। या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी माजी प्रांतपाल लायन CD सेठ, माजी प्रांतपाल लायन दीपकबाई शाह, माजी प्रांतपाल लायन श्रीकांत सोनी, डिस्ट्रिक्टचे CEO श्याम खंडेलवाल, लायन नीता शाह, लायन अलका डोंगरे, डिस्ट्रिक्ट चेअरपर्सन लायन सरिता सोनावळे व इतर लायन सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। लायन्स क्लब ऑफ पुणे शताब्दीच्या वतीनं नेत्र तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। DY पाटील आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पिंपरी या ठिकाणी या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या शिबिरात एकूण 18 रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली। या उपक्रमावेळी लायन दीपक कुदळे, लायन फ्रेडी गोदरेज, लायन कैलास मलिक व इतर लायन सदस्य उपस्थित होते। लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा खंडाळा आणि द फन हॉटेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी एकूण 41 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं। या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक रक्तदात्यास 5 लाख रुपयांचं विमा कवच देण्यात आलं। या उपक्रमावेळी लायन्स क्लब ऑफ लोणावळा खंडाळाचे अध्यक्ष लायन ॲडव्होकेट प्रफुल्ल लुंकड, ॲडव्होकेट लायन डॉक्टर संगीता लुंकड, सचिव लायन विरल गाला, लायन डॉक्टर दिलीप सुराणा, लायन डॉक्टर पोपट ओसवाल, लायन जुबेर शमशी, लायन मनोज लुंकड, लायन देवल पारेख, लायन मंगेश कदम, लायन कांता ओसवाल, लायन दीपाली गाला, लायन अश्विनी कदम, क्लबचे इतर लायन सदस्य, द फन हॉटेलचे जनरल मॅनेजर रमेश कुमार गुप्ता, HR मनोरमा मेहरा तसेच इतर स्टाफ व आधार ब्लड बँकेची टीम मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। लायन्स क्लब इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 मधील झोन 3 च्या वतीनं दिल दोस्ती दुनियादारी या थीमवर आधारित झोन सोशल या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी झोनमधील 225 लायन सदस्यांनी या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला। झोन चेअरपर्सन लायन अभय गांधी आणि लायन प्रीतम गांधी यांनी सर्व मान्यवरांचं स्वागत केलं। या झोन सोशलमध्ये विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केलेल्या सभासदांना बक्षीस देऊन त्यांचं कौतुक करण्यात आलं। या झोन सोशलसाठी डिस्ट्रिक्ट CEO लायन श्याम खंडेलवाल, गॅट कोऑर्डिनेटर लायन सुनील चेकर, लायन रेखा शेट्टी, डिस्ट्रिक्ट चेअरपर्सन MJF लायन राणी अहलुवालिया, लायन श्रीकृष्ण बागडी, लायन प्रभाकर शेट्टी, लायन शमा गोयल, MJF लायन सतीश राजहंस यांचे विशेष सहकार्य लाभले। यावेळी लायन्स क्लब इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 चे प्रांतपाल लायन विजय भंडारी, डिस्ट्रिक्टचे खजिनदार लायन राजेंद्र गोयल, प्रथम प्रांत महिला लायन भारती भंडारी, पास्ट इंटरनॅशनल डायरेक्टर लायन नरेंद्र भंडारी, पास्ट मल्टिपल काउन्सिल चेअरपर्सन लायन द्वारका जालान, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर लायन चंद्रहास शेट्टी, लायन CD शेठ, लायन अरुण शेठ, लायन राज मुछाल, लायन राजकुमार राठोड, रिजन चेअरपर्सन लायन संतोष नहार, कॅबिनेट ऑफिसर्स, झोन चेअरपर्सन व इतर लायन सदस्य उपस्थित होते। हाय, मेरा नाम हीरामन राठौड़ है और मैं लायन्स क्लब ऑफ पुणे भोसरी का प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 7 साल से मैं लायनिज़म में हूँ। और इस साल यहाँ पर जो DG साहब है उन्होंने भंडारी सर ने एक नया इनोवेटिव आइडिया लिया है, वो बिजनेस फोरम का। ये बिजनेस फोरम का एक कार्ड है, एक कार्ड सभी मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और इस कार्ड में बिजनेस, अपना जो बिजनेस है, जैसा मेरा बिजनेस पेस्ट कंट्रोल का है तो मैंने इसमें ऑलरेडी रजिस्टर किया है और मैंने इसमें डिस्काउंट भी ऑफर किया है। ऐसे आप भी सब लोग अपना बिजनेस इसमें ऐड कर सकते हो, उसको कोई कॉस्ट नहीं है। और ये बिजनेस जो अपना ग्रो होने के लिए हेल्प होगा, क्योंकि इस क्लब में ऑलमोस्ट 6000 प्लस मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट में है। तो सभी मेंबर को वो जब शॉपिंग करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेस वो यूज़ करेंगे तो उसका डिस्काउंट वो मेंबर को मिलेगा और वो बिज़नेस वो
जिसने ऑफ़र किया है डिस्काउंट उसको मिलेगा। और ये डिस्काउंट ऑफ़र लाइन मेंबर भी कर सकते हैं और नॉन लाइन मेंबर भी कर सकते हैं, तो जिसको दोनों को फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी एक अमेजिंग स्कीम एक भंडारी साहब ने निकाली है इस साल के लिए, तो बहुत अच्छा है। सबने इसको यूज़ करना चाहिए और अपना बिझनेस में इसमें ऐड करना चाहिए, जैसे मैंने किया है। थँक यू व्हेरी मच। हे होतं आजचं लायन्स न्यूज बुलेटिन. नव्या बुलेटिनसह पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत अशाच बातम्या पाहण्यासाठी लायन्स न्यूजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.